Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We now start our session. It's about the dynamics of Karachi. We are joined today, Tariq Qaiser Sahab. He is an architect and filmmaker, and also a conservationist. Mayor Karachi, Murtaza Wahab Sahab, Arif Hasan Sahab, and then Afia Salam Sahaba. Before we start, we'll be talking in English, Urdu and English mix. कराची के बारे में थोड़ी मैं ब्रीफ आपको प्रोफाइल बताऊंगा, उसके बाद वील स्टार्ट डिस्कसिंग मोर। कराची की बेसिक शुरुआत जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई। मॉडर्न जो कराची है वो अंग्रेज़ों का डिज़ाइन किया हुआ था। ये वो ब्लेस्ड सिटी है जिसमें दो दरिया थे, मलीर और रिवर थे, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो फ्लोइंग लाइव इस तरह नहीं है जिस तरह होने चाहिए। 15 किलोमीटर के बीच में, दो दरियाओं के बीच में ये शहर था ओरिजिनली, फिर एक्सपांड होते होते ये एक बहुत बड़ा मेगा सिटी बन गया है। यहाँ की दो क्रीक्स थी, कोरंगी और अपना कोरंगी ओके द नहीं ये जो जहाँ पे कॉलोनी बनी है, एनीवेज कौन सी कॉलोनी? मैं बताता हूँ। अच्छा, इस शहर के दो की लेगून्स थी, ओबायो एंड नैनार। Unfortunately, Obayo is totally gone. The Nainar lagoon is totally degraded, so the city is now without any lagoon. उसके अलावा जो एक और यहाँ की डायनामिक्स है वो ये है कि basically this is a tidal delta region. Indus Delta is a tidal delta. तो land reclaim करते करते we have gone so much inside कि there is a possibility that the जो tidal प्रेशर है वो स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर सकता है। ये एक ऐसी क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें लोग बात करने से गुरेज करते हैं क्योंकि इसमें रियल एस्टेट इंटरेस्ट होता है। उसके बाद ये है कि आरिफ हसन साहब वेरी कीन ऑन टू टॉक अबाउट द डिग्रेडेशन, द वैल्यू सिस्टम, द बिरादरी, द द अमन और अमान जो होता है, जो कल्चर होता है, वो जो आरिफ साहब उसमें बात करेंगे। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा आरिफ हसन साहब को कि वो एज अ कराचीite who has seen the whole city evolving and seen the whole dynamics, कि वो हमें बताएं कि उन्होंने क्या देखा और क्या हो रहा है। आरिफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया Masood साहब for having invited me to speak about something that I have seen. I am now 81 years old. I have practiced in this city and fought against whichever government has been in power because of all the bad projects it comes up with, and fought with considerable success because of support from various colleagues and students. Now, Karachi, of course, naturally, like all cities in the world, has changed. But for me, the changes of the last 20 years especially, I'm less concerned about water, I'm less concerned about garbage, I'm less concerned about sewage, although my life has been spent in sewage projects. All this I leave to my friend, Murtaza Sahab. Hopefully he will solve all these problems. What I would like to say a few words about is the social change that has taken place in this city, especially in the last 20 years. And I would classify that change in four things. First is the change in the use of public space. We see its use has shifted from families to couples. I have recorded this fairly well in my books, and it's a very big and fundamental change. Second
It is the breakdown of the extended family. In the Karachi Development Plan 2000, 48% of the surveyed families said that they were living as nuclear families. In the 2006 survey, 89% families said that they were living as nuclear families. Now, I think that this is an extremely big change. Also, marriage, the manner you get married, the age at which you get married, fertility rates, etc., especially in the age group of 15 and 24, which in a sense is the most important age group because this is your future as well as your present. All these figures, and you can get them in my writings if you're interested, have undergone a very big change. Just to give you one example, in the 1960 census, 63% of women in this age group were married. In the 2017 census, only 22% women in this age group were married. Now, if this is not a change, it's a huge change. Recently, I got together, I haven't been around for 6 years now. I got together people who had worked with me in Rangi for ages. I got them together. I went there, we sat down, we had a discussion. And I just give you 2 or 3 points about that discussion. I asked them, because they've grown up now, I asked them, are you married? The majority said, no, we are not married. I said, why are you not married? We are not married because our parents want us to get married to the wrong sort of people. We don't like them. Another group said, we are not married because we want to live away from our parents and we can't afford to live away. And these are working class people, can't afford to live away, and we can't afford to get married. And then to tease them, I said, then what is going to happen to you? And one girl with mischief in her eyes said, nowadays we get married on TikTok. And there was great laughter. And now I don't want to go into the details of this because all this is recorded if anyone is interested. So there is such a big sea change. Now my interest is, what is going to happen 10 years from now? This is another generation. It has nothing to do with most of you, and it certainly has nothing to do with me, I can assure you. It has a different vocabulary. When I started to work in the low-income settlements of this city in 1973-74, we used to go into the settlements. Old people used to come and see us, and they would say, Janab, Huzur, aapse sharf hasil hua, milke, hum aapke niyazmand hain. Go today, and a young man will come there, and he will say, Uncle, kya haal hai? Kyun aaye hain aap? Gone. All this feudal vocabulary simply does not exist. If that is not changed, then what is changed? In 1972-73, there were no working women, believe it or not. The only women who worked were those who used to receive contracts from contractors to make towels and things within their homes. Today you go to the same settlements and you find Suzuki loads of women go in the morning to work in pharmaceutical factories, in the garment industry. They go to work in the packaging industry because without them, the house cannot function. And if they go to work, it gives them an enormous amount of freedom to come and go, although it's still restricted to a very great extent because of tradition. But I think in another generation, it will be very, very different. There are problems for the promotion of these changes that have taken place.
and it'll be too long, so I will stop here, just introducing these things that have changed, and the use of public space in certain segments, not everywhere in Karachi, that has undergone a big change. And the use of public space requires a certain sort of infrastructure, like public toilets for women, which will speed up this change and change the society to a very great thing. And just one thing before I finish, that in our investigation and research, what we have discovered that the greatest impediment to upward mobility, the greatest impediment to education in a free market economy as we live in, the greatest impediment is the absence of a roof that you can call your own. That is what it is. Thank you very much. Thank you. Karachi used to be called City of Lights. Now, unfortunately, it is turning to be City of Kites, because everywhere you see up in the horizon, you see kites flying. Even in the coastal area where the beaches, the seagulls should be flying, you see kites and crows flying. So this is the city that we have to accept its degradation, its challenges. I would now request Tariq Saab, you will start with your video, or you'll... I'd like to speak a little bit, just 2 minutes. Tariq Saab will show us a video, and also he'll talk about his experiences. सर मेरी वीडियो लगा दें प्लीज़ तारिक कैसर की, मगर पॉज कर दीजिएगा फर्स्ट इमेज पे, पॉज कर दें प्लीज़, थैंक यू। हमारे शायर इकबाल, मोहम्मद इकबाल साहब का एक मिसरा पढ़ना चाहता हूँ जो ज़रूरी है सुनाना आजकल के हालात की वजह से, हमारे शहर की हालत की वजह से। ग़ुलामी क्या है, ज़ौक़ हुस्न ज़िबाई से महरूम मी। ग़ुलामी क्या है, ज़ौक़ हुस्न और ज़िबाई से महरूमी। ये क्यों अहमियत रखता है? लेट मी ट्रांसलेट इट फर्स्ट। What is slavery but the removal of the passion of the desire for beauty? If you do not have the beauty to be passionate about, you are predominantly and predestined to be a slave. After 37 years of practicing architecture in this city that I do love it. I question why, because I don't understand, but I think it is to do with where you've grown up, the smells, the sounds, the cultural influences that are so important in any urban fabric. I grew up in a joint family, I grew up in a mohalla, and all the wonderful things that go along with it, and I'm sure many of us understand and appreciate that. I won't elaborate on that. But I feel enslaved. I feel enslaved because the city of which I was supposed to be a custodian and an individual with the capacity and the training to have created something livable, something beautiful, have failed. At 62, I ashamedly, not unashamedly, I ashamedly admit that I and my generation have failed in being custodians of this incredible city. However, what do you do? I started writing. I'd like to read a small verse. It's excerpt of what is from a much larger piece.
in Urdu first. एक पिंजरे में तू है बंद, एक पिंजरे में तू है बंद, मगर इन सलाखों के सुर तो सुना. एक पिंजरे में तू है बंद, मगर इन सलाखों के सुर तो सुना. याद से कैसर, पाबंदी इश्क, ए आशिक, नहीं किया है तुझको रिहा. इसमें जिस चीज़ की अहमियत है वो ये है कि इश्क, मोहब्बत, खूबसूरती, ज़ौक़, जीने का ज़ौक़, इन खुदा की नेमतों का हमारे हाथ में, हमारे आँखों में, हमारे दिलों में जो चीज़ें हों, उन से आज़ादी लेना बहुत ज़रूरी है. और it translates like this कि Qaiser, you are imprisoned within these bars of this cage, but tell me, can you play the music that's written between these bars? And there's always music. And I want to thank all of you for being here, because being here means that you are a participant, not just a listener. And I want to especially thank the panelists, KLF, for doing this, the panelists for being here. I want to thank Murtaza for coming here. I would like you all to give him a big round of applause, because it's highly unusual. It's highly unusual for someone of Murtaza's position to put himself into a place where he is vulnerable and open and recorded to questions. And it's an honor for me that you are here, Murtaza, because if I see and look, if I seek the people who have the skills and the possibility and the cultural background to be able to read the music that is between these bars, these cage of constraints that we have, ये पिंजरा पाबंदी जिसमें हम लोग रहते हैं, उसकी सलाखों के दरमियान जो मौसीकी, जो सुर हैं, वो इन जैसे इंसान में सलाहियत है कि ये कुछ कर सकें. तो आज इनका इधर होना इतना लाजिम है, इतना ज़रूरी है, और हमारे लिए अहमियत रखता है कि शायद कोई ऐसा इंसान, ऐसा रहबर कह दें मुर्तज़ा आपको कि आ गए हैं, that perhaps someone, the mayor of Karachi, a leader of Karachi is here, who has it in his heart to hear the music between these bars and to try and pull back this. So I would like to show the film, please. This is a 6-minute film. It's a little heart-wrenching at parts, Murtaza, for you especially, but you know the work I do, so you are familiar with what we'll be saying here. Please run the movie. Thank you. Our journey to understand how important mangroves are ends in Karachi's jungle, a city without a master plan. Karachi is a mega city. Some 20 million people live here within dense concrete, largely devoid of trees, coping with a high demand for growth, modernity, and housing great disparity in quality of life. This is an urban sprawl without master planning and managed by 18 independent municipalities that don't coordinate with each other. And this chaos translates into this. All the water has to be supplied by tankers. Exactly. And there's no gas. There's no gas, there's no hardly any infrastructure of electricity. There are power breakdowns that are constant.
It is a city in chaos. Oh yes, definitely it is. And below this rubble that you see in this so-called storm drain is raw sewage water. And the solid waste that's floating on top, including the sewage, is dumped on a daily basis into the ocean. And this needs to stop. This solid waste and this sewage has to be treated and removed before it is allowed to reach the sea. Karachi's wastewater treatment plants exist but do not function. Some 7,000 tons of waste are dumped into the ocean every day. Even medical waste washes up on the beaches. More than 400 million gallons per day of untreated sewage is dumped into our waterways. There are times that the very visible line between incoming tide of clean seawater and the outflowing wastewater speaks volumes. It is alarming. The signs are visible. There is a solution. Place exists just outside Karachi. It's a vast forest of incredible beauty, hiding many surprises. A place uninhabited by people and full of life. Not many people work here. Few come to visit. I'm Tariq Alexander Qaiser, and over the last decade I've visited this magical place almost every Saturday. This is my habitat of comfort. It's a place I love, treasure, and know well. Karachi's very special forest. We're standing here in the middle of a creek in Bundle Island. These are Karachi's mangrove forests. They're lush, they're healthy, and they grow profusely. We still have them with us, but for how long? Because all is not well, and they are being cut. They're being cut at a rate that will deplete this forest very, very soon. The destruction of this forest will have ecological impacts that will reach beyond our generation. It is illegal to cut these forests, but it's still being done. And the reason is that the laws are in place, but their enforcement is very weak, and the monitoring is virtually non-existent. We can't afford to lose these wonderful forests, but they are being cut. And I do not know how long we will have them within the neighborhood of Karachi. I stand as witness that these forests are being cut. All the images are dated and geotagged. They are, the labeling is on the bottom, you couldn't see it. The solution for Karachi is virtually impossible. But impossibility does not mean atrophy in our own minds and souls. We have to keep moving forward.
if I were to give a starting point for where we need to fix our things, it is our natural ecosystems and the forests that still exist. They still exist. Those need to be protected. Those need to become nature reserves. They're already a Ramsar site, we know that. However, the implementation and protection of these areas is paramount, not just for an aesthetic beauty so that we are not slaves anymore, but for our own, is it enough? For our future generations' health, mental health, and physical health. Without these forests, Karachi will lose what we used to call the Karachi breeze. So Murtaza, I look to you. Thank you. Thank you, Tariq Saab. It was an eye-opener to see how the challenges are there, but the opportunities are also there. With his view that mangroves are important, I tell you that mangroves can sequester carbon 7 times more than the rainforest. So technically, the city like Karachi should never have a problem of air quality because we are surrounded by the coast and there should be mangroves that should be sequestering the carbon. And this is unfortunate and really paradoxical that coastal city is one of the top 6 most polluted, air polluted cities in the world. I would like, but as he said, Tariq Saab, that there is still a chance, a possibility that we can restore the ecosystem because still the wilderness is there. The flamingos are coming and the solutions are there. Murtaza Wahab helped me, Masood Lohar, and we worked together to create an urban forest, Clifton Urban Forest. And before Afia, I come to you, I would like the video to be, played. This is not National Geographic. This is Clifton, Karachi, Clifton Urban Forest. This is Clifton Urban Forest artificial lagoon that we developed in 2021. And it is probably one of its kind artificial lagoon in the world which has attracted such biodiversity in such short of period of time. Afia Salam Sahaba, you have you are a Karachiite and you have seen the things emerging from your own perspective. Over to you. Assalamu alaikum. Thank you very much, Masood, and my panelists and KLF. So I am an unabashed Karachiite. I can't be anything else. I can't imagine myself to be anything else. अच्छा बुरा जैसा भी है, बस कराची मेरा है और मैं कराची से ही अपना सारी जो आइडेंटिटी है उसको जोड़ती हूँ. इसके मुतालिक शिकायत भी हैं और ज़ाहिर है जो अपने होते हैं उनसे रिलेशनशिप बिगड़ती भी है, बेहतर भी होती है. तो कराची को बचपन में जिस तरह से देखा वो और नज़र थी, बड़े होते हुए मुश्किलात देखी, जब ख़ुद से बसों में जाना पड़ा, तकरीबन अपने आप ऑलमोस्ट एंकल डीप गटर के पानी में भी चलना पड़ा जब बारिश में अर्बन फ्लडिंग होती थी, विच अगेन इज़ नॉट अ रीसेंट फिनोमिनन.
70s की बात है, कॉलेज में थे, एम्प्रेस मार्केट पे हम गंदे पानी में से जाके बस ढूंढने की कोशिश करते थे कि घर जाएं। नॉर्थ नाज़ाबाद में रिहाइश थी, कई मील पैदल घर चल के जाना पड़ता था। सो वो सारी फेजेस मैंने देखी हैं। कराची को मैंने अच्छा देखा, बहुत अच्छा देखा, फिर बिगड़ते देखा, फिर सुधरते देखा। इन ऑल दीज द जर्नी हैज़ इज़ ऑनगोइंग। अब इसमें हम ये उस तरह है कि एक जैसे नालायक औलाद होती है, या तो उसको आप आग कर देते हैं या फिर उस पर आप काम करते रहते हैं, उसके साथ काम करते रहते हैं और कहते हैं कि भाई जिस तरह से जो बेहतर हो सकता है हम उसे करें। तो मैं नहीं समझती कि अभी तक कराची मेरे लिए उस स्टेज पे पहुंचा है कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी से आग कर दूं। तो मैं इसको फिर इस नज़र से देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है उन लोगों से जिन्होंने बहुत बुरे हालात में, बहुत मुश्किल हालात में इसके लिए कुछ ना कुछ किया, और फिर मैं कहती हूँ कि ये कर सकते हैं तो मैं इनके साथ अपना कुछ हिस्सा डाल लूँ। आरिफ साहब ने जो बात की, इनका जिस तरह का एक वो बॉडी ऑफ वर्क है डेवलपमेंट का, आपकी लो कॉस्ट हाउसिंग में सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इन्होंने जिस एक पॉइंट को पकड़ा अभी कि ख़वातीन का इस शहर के अंदर रोल कैसे बदला है और उसने इस शहर को बदलने में क्या अपना एक किरदार अदा किया है, मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जिसके बारे में बात ही नहीं होती है। और आगे इसका क्या असर होगा हम उसको भी देखें कि अगर इस तरह से ख़वातीन अब कुछ, और हर तबके की, ये बात भी नहीं है कि सिर्फ आपके लोअर सोशियो इकोनॉमिक तबके में, कि और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मौका मिला काम करने का मुख्तलिफ लोगों से, जिसमें हमने वो तमाम तबकात भी देखे, उनके मसाइल भी देखे और वो तमाम जगह भी देखी जिनकी निशानदेही तारिक ने भी की है, मसूद ने भी दिखाई है। तो तारिक ने जिस तरह से कंपैरिजन दिखाया है बिगाड़ का और उसमें बहुत अच्छाइयों का, वो तमाम जगह देखी हुई हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किन चीज़ों ने इंस्पायर किया, तो बहुत बड़े लेवल पे पॉलिसी के कुछ डिसीजन होते हैं। कहते जी आपके लिए वोटिंग राइट, हम जब थे शुरू में, जब इलेक्शन हुए थे 21 था, उस इलेक्शन में हम हिस्सेदार नहीं थे, फिर 18 हो गई तो हमने बहुत ज़्यादा उसमें देखा हिस्सेदारी आई। आप ये देखिए कि इंस्पिरेशनल चीज़ें क्या होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैंग्रोव्स की कटिंग दिखाई यहाँ पे, एक शख्स है, पावर ऑफ वन। मेरे ख्याल में जितने लोग यहाँ पे हैं जिनका कुछ माहौलियात से ताल्लुक़ है, वो तो उनके नाम से यकीनन वाकिफ़ होंगे। बाबाए मैंग्रोव उनको किसी वजह से कहा जाता है, मरहूम ताहिर कुरैशी साहब। दैट वाज अ पावर ऑफ वन। ठीक है, वो एक छोटे से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि देखिए हम भी बात करते हैं जब हम मोनोलिथ की बात करते हैं, और इसीलिए आरिफ साहब ने बहुत सी बातों में से एक वो नुक्ता उठाया जिसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं होती। हुकूमत को ब्लेम कर देना बहुत आसान होता है, आसान तरीन है, उसकी शक्ल नहीं होती कोई, लेकिन उसके अंदर अफराद होते हैं, और उनमें से भी कोई अगर फ़र्द अपना पावर ऑफ वन दिखाए तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। ताहिर कुरैशी ने ना सिर्फ बलूचिस्तान में रीजनरेट किए, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो डेल्टा नहीं है, वहाँ पे भी आए। उसके बाद वो वहाँ के डेल्टा से कुछ स्पीशीज़ यहाँ लेकर आए जो कि यहाँ नापैद हो चुकी हुई थी। तो हम उसकी हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन की भी बात करें, हम उसको भी देखें कि उनके उस डिपार्टमेंट के वो लोग जो हमें कभी नज़र नहीं आते, जो शदीद गर्मी में, और आप अगर किसी दलदल के अंदर गर्मी में खड़े होते हैं, और मसूद ने ये खुद एक्सपीरियंस किया है और तारिक ने किया है, तो उसमें किस कदर मुश्किल होता है वहाँ जाके कुछ भी करना। वहाँ सिर्फ खड़े रहना मुश्किल होती है, लेकिन उन लोगों की मेहनत से पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद एरिड एरिया मैंग्रोव कंट्री है जिसने 300 गुना इजाफा किया है मैंग्रोव्स की। ठीक है, अब हम यहाँ कराची की बात कर रहे हैं। कराची के मसाइल अगर हम उसको थोड़ा माइक्रो उसमें देखें तो यस, यहाँ डेग्रेडेशन हो रही है। वो क्यों हो रही है? हमारे यहाँ आबादी का तनासुब किसी ने देखा है? जो लोग बसते हैं हमारी साहिली पट्टी पे, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? गैस है उनके पास, तो क्या सिर्फ हमको हक है कि हम दिन में 3 मरतबा गर्म खाना खाएं? जब उनको और कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो कानून के अंदर एक शिक रखी गई है जिसमें उनको अपने पर्सनल यूसेज के लिए वो काट सकते हैं, दरख्त नहीं काट सकते, ब्रांचेस लॉप ऑफ कर सकते हैं। उनके पास गधे हैं, उनके पास जानवर हैं, उनको उन्होंने खाना खिलाना होता है, उन्होंने अपने लिए भी पकाना होता है। उनको सिर्फ उस हद तक, बियॉन्ड दैट अगर आपको मैंग्रोव्स की जैसे इन्होंने दिखाई कि हो रही है बेदरेक कटिंग, उसके अंदर फिर वो गवर्नेंस का फुकदान है।
तो हम बहुत सी बातों में सिर्फ उस प्रॉब्लम की निशानदेही करते हैं, हम गवर्नेंस की तरफ नहीं जाते। और फिर हम, बहुत खुशी है मुझे कि मुर्तज़ा यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनसे अगर मैं शिकायत करूँ तो हम इस हकीकत से भी वाकिफ़ हैं जो हम अज़राए तफन्नुन कहते हैं कि भाई ये लाश किस थाने की है, ये लाश यहाँ गिरी हुई है, ये किस थाने की है, कौन उठाएगा इसको? और अगर वो दोनों थानों के बीच में गिरी हुई है तो फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा? तो हमारा कराची इस तरह का शहर है कि हमें यही नहीं पता कि लाश कौन उठाएगा। पहले तो ये नहीं पता होता कि वो लाश उधर गिराई किसने, और फिर उसको कौन ठिकाने लगाएगा। एक गवर्नेंस के हिसाब से एक फ्रैक्चर्ड सिटी में जितने और एक गुंजान आबाद शहर जो कि साउथ एशिया के एक अंडरडेवलप एरिया के अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है, उसमें एक इस फैक्टर को उसके ऊपर ओवरले करके देखें और फिर हम सॉल्यूशंस मांगें। तो सॉल्यूशंस आपको अगर इंटीग्रेटेड चाहिए तो वो ये नहीं हो सकता कि मैं मुर्तज़ा से शिकायत करूं कि मतलब ये यहाँ हो गया है, तो ये मेरा इलाका ही नहीं है, मैं क्या करूं आपके लिए, आप किसी और से बात करें। सो जिसका भी इस शहर में गवर्नेंस में स्टेक है, मेरे ख्याल में सवालात सबसे होने चाहिए, वो सब यहाँ बैठे होने चाहिए। सो मैं कुछ पॉजिटिव इसकी मैं बाद में बात करूँगी व्हेन यू कम इन द नेक्स्ट, बिकॉज देयर आर सम वेरी पॉजिटिव स्टोरीज व्हिच कैन इंस्पायर ईच एंड एवरी कराचियाई टू प्ले his and her role in making the city livable, not just for ourselves but make it a livable city. हमें अच्छा नहीं लगता जब वो आपके लिवेबिलिटी इंडेक्स पे कहते हैं कि जी कराची नीचे, जिन इंडेक्स में आप जो नंबर एस्पायर करते हैं हम उनमें सबसे नीचे होते हैं, जिसमें हम चाहते हैं टॉप पे हों वहाँ नीचे होते हैं, जिसमें नीचे होने चाहिए उसमें टॉप पे होते हैं। तो वी नीड टू एड्रेस दोज थिंग्स कलेक्टिवली। थैंक यू। क्योंकि हमारे यहाँ एक तरह की बात समझी जाती है कि कोई एक बंदा या एक लीडर जो किसी भी टीयर पे बैठा है वो मसला सॉल्व करता है, ऐसा नहीं होता। मतलब मैं अपनी मिसाल दूँ कि जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट, आई डिडंट अप्रोच मुर्तज़ा, ही अप्रोच्ड मी, ही said if we provide you a land will you do that, and then he continuously supported us, and with his support we were able to create that heaven. The same thing is that if citizens, and you know, as Afia said, one person can do a lot. Tariq is doing something, Afia is doing something. If we do it together and then we have a leadership who can add value and support us, I think we can make wonders. The other thing is that I remind you all that Karachi has been vulnerable to disasters. And the reason I'm mentioning this is that now the KBC and Murtaza Sahab can really create a disaster management authority or a system in the KMC. कहते हैं कि तूफान या साइक्लोन कराची में नहीं आता, अब्दुल्ला शाह गाजी साहब उनको रोक लेते हैं। रोकते ज़रूर होंगे, लेकिन 1902 में यहाँ पे साइक्लोन आया था, 1945 में आया था, 1944 में आया था। The cyclone in 1945 displaced 10,000 people. At that time, the population was only 4 lakh. So you can imagine what proportion you can expect. और फिर 1964 में साइक्लोन आया, 1944 में यहाँ पे सुनामी आई, जिससे 4,000 लोग मकरान जो है कोस्ट पे मरे जा रहे। उस ज़माने में कम्युनिकेशन इतनी थी नहीं, आइलैंड्स पे भी लोग मरे होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। सो यू कैन इमेजिन। अच्छा, आपको ये भी रिमाइंड करा दूँ, कराची इज सिचुएटेड 150 nautical miles from the triple junction, tectonic junction, अरबन प्लेट, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। कई हज़ार न्यूक्लियर बॉम्ब्स की एनर्जी वहाँ पे मौजूद रहती है। एंड अ लिटिल movement you can expect, and it was simulated by some organization that if the tsunami gets generated, it can wipe out Karachi in 20 minutes. It's not me saying, it's on the record. So we have to be prepared for that. And for that preparedness and giving this background, I'm also highlighting one more thing, that the paradigm of economy in our country is real estate dominated. अब हो ये रहा है कि ब्लू कार्बन से, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन क्रेडिट से पैसे इतने ज़्यादा मिल रहे हैं कि मुझे लगता है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डिफेंस कार्बन अथॉरिटी बन जाएगी और बनना चाहिए। और उसके अलावा जो ये 2 रिवर्स का मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, मलीर और लियारी, दोनों लिविंग रिवर्स हैं और दोनों हाइड्रोलॉजिकली, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, कैन बी रिहेबिलिटेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू complex wetlands
with water lilies and lotuses. It's very easy, and then it can it can create that situation where you can start a microeconomy of tourism, ecotourism, when people get attracted to these places. And the other thing is, दुनिया पूरी जो है वो बीच टूरिज्म से कमाती है. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो बीचेस हैं वो रियल एस्टेट में तब्दील गए. और बड़ी पैराडॉक्सिकल बात है कि जो लोग डिफेंस और क्लिफ्टन में रहते हैं वो बीच पे नहीं जाते. वो बीच जाने के लिए दुबई जाते हैं. और जो बीच पे आते हैं वो आते हैं शीरी जना कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, गीदड़ कॉलोनी, इन कॉलोनियों से आते हैं. और वो वहाँ जब आते हैं तो क्वालिटी ऑफ बीचेस वो है नहीं, क्योंकि जिनको बीच इंप्रूव करना चाहिए वो ये बीच एंजॉय नहीं करते, वो कहीं और करते हैं. मैं आपको बताऊं, ये रोने वाली बात है कि पूरे कराची के बीच में कहीं पे भी आप स्विम नहीं कर सकते, क्योंकि स्विम करने के वक्त एक थैली इधर लगेगी, फिर आप उठोगे तो दूसरी थैली इधर लगेगी. आप खुश होंगे कि ये कोई फिश मुझे लगी है, लेकिन ये इतना प्लास्टिक आपके पानी में आ चुका है. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग हियर, आई एम अ मॉडरेटर, आई एम नॉट अ स्पीकर. मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फिल बदी बहुत टाइम है. मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम मेरे ज़िम्मे इस वक्त, बिकॉज परेशानियों की सब बात करते हैं, वी ऑल टॉक अबाउट इश्यूज, बट सोल्यूशन के ऊपर हम पहुंच ही नहीं पाते हैं. बाय चॉइस मैंने ये ओहदा लिया बिकॉज आई वांट टू गो टुवर्ड्स सोल्यूशंस. मसूद शुरू में कह रहे थे कि कराची इज़ द सिटी ऑफ लाइट्स, गेटवे टू पाकिस्तान, इस तरह की बातें. मैं समझता हूँ कराची इज़ द सिटी फॉर ऑर्फन्स. जिसका कोई नहीं होता उसका ये शहर होता है. मुल्क भर से लोग पैसे कमाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, सेहत की सहूलियात को हासिल करने के लिए, they prefer to leave their villages, their cities, and they come to Karachi. And this is the most amazing thing about Karachi, that Karachi embraces everyone. There is no discrimination here. हम लोग सबके हाथ खुले हुए हैं और सबको हम इजाज़त देते हैं कि ये उनका अडॉप्टेड शहर बन जाए. लेकिन सैडली I'd like to say कि कराची सबके लिए, लेकिन कराची का कोई नहीं है. And I would like to continue from where Masood started. मसूद ने बीच के लिए कहा ना कि वो लोग बीच एंजॉय करने के लिए दुबई चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं. मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, पीपल हु हैव द इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, दे डोंट एंजॉय हियर. दे गेट द ऑप्शन, दे लीव पाकिस्तान, दे गो टू यूरोप, दे गो टू अमेरिका. उनके बच्चे बेसिक तालीम यहाँ हासिल करते हैं, एंड देन दे ऑप्ट टू गो serve somebody in UAE, somebody in UK, somebody in Canada, Australia, America. And that is why I feel कि एक abandonment हमारे यहाँ है, जिसकी वजह से current apathy हमको नज़र आती है. मेरा ये मानना है, and I'm convinced, कि जो शहर पाकिस्तान को चलाता है वो शहर चल सकता है, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है इसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. एक चीज़ के बारे में आफिया ने बात की कि मल्टीपल जुरिसडिक्शंस हैं, कि वी आर स्टिल नॉट क्लियर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इतना क्योस, इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है. एक आरिफ साहब ने बात की सोशल वैल्यूज़ की. यू नो, वी गो टू लाहौर, हम कहते हैं हम लाहौरी हैं. कराची में ये कॉन्सेप्ट ही अब नहीं रहा. हम कमा यहाँ से रहें लेकिन भेज पैसा अपने गांव में रहें. हम सर्विसेज इस शहर की इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इस शहर की इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मेरे जैसे, मैं तो खैर नौजवान कैटेगरी में नहीं हूँ, बट मुझसे ज़्यादा जो यंगर क्राउड है वो कहता है ठीक है जी, मैं IBA से ग्रेजुएट कर गया हूँ, मैं NED से ग्रेजुएट कर गया हूँ, मैं डाउ से, KMDC से ग्रेजुएट कर गया हूँ, अब मैं I'll go to the West and I'll serve the West. और मेरी कनेक्शन पाकिस्तान से ये होगी कि मैं कुछ पैसे पाकिस्तान को भेज दूंगा. And this, in my view, is our biggest problem. अगर हमें as Karachiites, we want to find a solution to the bad state of affairs that Tariq Saab was showing in his documentary, then we will have to pull up our socks and start owning our city. And unfortunately, that is missing.
हम लोग सब के सब नेसेयर्स बन गए हैं। हम अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करते हैं, हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं करते हैं। वी ऑल फोकस ऑन द थिंग्स विच आर नॉट हैपनिंग इन द सिटी। मसूद ने आपको जो वीडियो दिखाई वो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कहता कि मैंने वो काम किया इसके साथ, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस जगह पे जब 2021 में ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया तो इट वाज अ गार्बेज लैंड। सॉलिड वेस्ट शहर का वहां पर फिलअप किया जा रहा था, गंद था, कचरा था, गलाजत थी। मसूद ने मुझे कहा कि वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस इनटू अ ग्रीन एरिया। मैं कहा चलें ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जब मसूद मुझे कहता था कि यार यहाँ पे बर्ड्स आएंगी, माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगी, मैं इसको ग्रीन कर दूंगा, तो आई यूज्ड टू से यार हो नहीं सकता, इतना बड़ा सी व्यू वाली ज़मीन है, आज तक मैंने वहाँ हरियाली नहीं देखी, यहाँ कैसे होगी? दे हैव मोर रिसोर्सेज देन अस। ही सेड नहीं, लेट्स वर्क ऑन इट। He found people, he brought those workers from all over the province, if I'm right? Preferably from Thar. उन लोगों को वहाँ स्टेशन किया, ये खुद वहाँ बैठा, गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, इसने खुद सपोर्ट की, लोगों ने सपोर्ट की। आज इन अबाउट 2.5-3 years टाइम आप वहाँ देखेंगे तकरीबन कोई 145 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड दे कम ओवर देयर, और यकीन नहीं होता आपको कि एक्चुअली ये कराची है। So, instead of being the harbinger of bad news, मैं आप लोगों के साथ engage ये करना चाहूँगा। और ये urban dialogue वाला जो word है, this is very interesting because yesterday a friend of mine messaged me saying कि you're going to KLF, the audience is very hostile. But मैंने कहा नहीं, as People's Party I've gotten used to it now. ये अर्बन डायलॉग शहर में मिसिंग है। अर्बन डिवाइड ज्यादा हो गया है हमारे यहाँ, डिविसिव नेचर की पॉलिटिक्स है, डिविसिव नेचर की इंगेजमेंट है, अमीर अमीर से बात करता है, गरीब गरीब से बात करता है, कहीं कोलैबोरेशन है नहीं। तो मैं आज आने का मकसद ये था कि लेट्स वर्क ऑन दिस अर्बन डायलॉग। द मेयर KMC will offer you, let's find avenues, let's find areas where we can all split the differences, bridge the gap, and we work together to create a Karachi that was here back in the 19th century when Frere Hall was built, when Karachi Port Trust building was built, when KMC building was built in 1932, when the High Court, when Sindh Assembly, all of these fantastic structures were built in the city of Karachi by workers of the province of Sindh, of this area. मैं आप लोगों के साथ एंगेज करना चाहूँगा। अगला 3.5 साल मेरे पास है, उस 3.5 साल में मैं आपके साथ मास्टर प्लान पे भी काम करना चाहूँगा। जो सॉलिड वेस्ट के इश्यूज़ हैं मैं उसके ऊपर भी काम करना चाहूँगा। मैं आपके साथ ग्रीन एरियाज, अर्बन फॉरेस्ट के ऊपर भी काम करना चाहूँगा। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को कैसे बेहतर बनाने उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। ये जो मल्टीपल टेरिटोरियल जूरिसडिक्शंस हैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि जब कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो आप कहते हैं जी फलां जिम्मेदार है, बट वी डोंट इवन नो कि एक्चुअली म्यूनिसिपल फंक्शन वो है किसका। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट इज और व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद कराची इन माय व्यू। आई विल सीक योर गाइडेंस, आई विल सीक योर इनपुट, एंड परहैप्स विल बी एबल टू वर्क आउट ए स्ट्रैटेजी कि हाउ कैन द रॉन्ग ऑफ कराची बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गुड, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज इन दिस सिटी वेयर दैट गुड हैज़ हैपेंड। आई डोंट वांट पीपल टू लूज होप। मेरा टारगेट ये है, whether it is establishment of green zones, whether it is converting our energy base from fossil fuel to renewables, whether it is creating avenues of vocational training centers for our youth. Arif Saab emphasized the importance of urban spaces, of creating those urban spaces जिसके ऊपर अदालतें unfortunately हमको काम नहीं करने देती हैं। अब लाहौर में काम हो सकता है, इस्लामाबाद में काम हो सकता है, कराची में उस अर्बन स्पेस को अगर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें तो रोक दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कराची शहर में होता है। ट्रांसपोर्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, सॉलिड वेस्ट के अंदर थैलियों की बात की जाती है, मैं प्रोपोनेंट हूं कि थैलियों को बैन कर दिया जाए, लेकिन देर आर पीपल हु लॉबी
कि नहीं इसको बैन नहीं कर सकते हैं. And I'll give you an example. In 2021, when I became the administrator of Karachi, one of the first decisions that I made was कि थैलियों पे absolute ban होगा. ये जो एक हमारा fancy term है ना, biodegradable, non-biodegradable, we can't distinguish. जो ठेला एम्प्रेस मार्केट पे है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता. तो उस टर्मिनोलॉजी की आड़ में हर तरह की थैलियां चल रही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो इन्फोर्स नहीं हो पाता. तो उसका हल ये निकाला हमने, कहा एब्सोल्यूट बैन लगाएं जैसे इस्लामाबाद में लगा हुआ है. लेट्स डू इट. समवन वेंट टू कोर्ट, द कोर्ट स्ट्रक इट डाउन. हमारी गवर्नेंस का ये जो इन्फोर्समेंट का बात कर रही थी ना आफिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो एग्जीक्यूटिव रिट है ना वो खत्म हो गई है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई. और वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो गई है, देयर आर सो मेनी मल्टीपल फैक्टर्स विच इंटरवीन एंड इंटरफेयर. ये बंदा काम करने से पहले सोचता है. जो पुलिस अफसरान यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे कि डेली बेसिस पे माशाल्लाह किस तरह बेइज्जती होती है, किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है. सो आई वॉन्ट such urban dialogues to take place at a more frequent level, and I would like to offer my services. I would like to offer the city council hall कि अगला urban dialogue अगर आपको करना है तो आप हमारी city council के hall में करें. आके देखें कि जमशेद नुसरवान जी ने 1932 में कराची के लिए किस तरीके से काम किया था. Let us cherish our heroes. मुर्तज़ा साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि हम मौका दें लोगों को आपसे सवाल करने का. तो देखिए मुझे रोक दिया गया. ये हाँ प्लीज कंटिन्यू. The offer is very simple. I am a Karachiite by heart. I want to do everything that it takes to make this Karachi a better place for my kids, for your kids. जो होना था वो हो गया है. उस पर कहते हैं ना मट्टी पाओ. आगे का सोचें किस तरीके से चीजों को ठीक करना है. I am ready and willing to offer whatever it takes to transform this Karachi into the Karachi of Jamshed Nusarwan ji और मेहता साहब. आपका सवाल है या ऑब्जर्वेशन? माइक दे दें प्लीज. गुजारिश ये है कि बहुत ब्रीफ रखें ताकि सब लोगों को मौका मिले. I would also like to request everyone to ask questions and not make statements. We have very little time. नहीं स्टेटमेंट की बात नहीं है जनाब. मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ. एक तरफ तो कराची म्यूनसिपालिटी है, एक तरफ वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं. हम बीच में फंसे हुए हैं. अब अगर ये इंडिया की तरह यहाँ पर भी कैंटोनमेंट बोर्ड ख़त्म करके सिर्फ म्यूनसिपालिटी को दे दिया जाए सारा इलाका, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. क्योंकि जहाँ पर जो भी खराबी होती है म्यूनसिपालिटी के खाते में जाती है, अच्छाई वो ले जाते हैं. यार ये कहाँ का इंसाफ है? This gentleman here, जी आप. मुर्तज़ा वहाब साहब, very nice of you. और जैसे मसूद लोहार साहब, मैं समझा ये तो चुमटा लेके आएंगे, लोहार नाम है इनका, लेकिन चले उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप आए हैं यहाँ ओपन डायलॉग करने के लिए. तो थोड़ा अपने घर से भी स्टार्ट करिए. मैं ख़ियाबान हिलाल पे वॉक करता हूँ और आपके घर के सामने एक ओपन प्लॉट है. उसमें जब आप घर में होते हैं तो 15 गिने मैंने, और जब आप घर में नहीं होते हैं तो फिर भी 8 गाड़ियाँ खड़ी होती. सब पे सिंध का नंबर प्लेट लगा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का. तो खुदारा इतना जुल्म तो न करे ना. मतलब आप मिसयूज आप करेंगे, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. तो आप मिसयूज आप करेंगे तो शहर कैसे ठीक होगा? let him. जी प्लीज. सर यही जो अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस है ना, उसने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया है. मैं तो बड़ा ओपन आदमी हूँ. आप आके मुझसे पूछ लेते कि मेरे पास वो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं. मेरे बराबर में एक और गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं जो वफाक के हैं. वो गाड़ियाँ उनकी हैं और कंटेनर भी उनका है. सर मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और इतने सारे लोगों के सामने गलत बयानी कर नहीं सकता. मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूँ, मेरे घर है 193/1, 193/2 को जाके देख लीजिए. मैं तो उसी सड़क पर वॉक भी करता हूँ, उसी सड़क पर मौजूद भी होता हूँ. जब कोई कचरा फेंक रहा होता है उसको रोकने की भी कोशिश करता हूँ. अभी भी मैं आया हूँ ना तो मेरे पास प्राइवेट गाड़ी है. मैं एक सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ
which is a protected vehicle, which is as per my entitlement. बाकी गाड़ियाँ मेरी नहीं है, चेक कर लीजिएगा. एक मेरी गुजारिश है, sir, no offense, please, we have to get rid of these presumptions and assumptions. ये presumptions, assumptions को खत्म करें. आपने 500 लोगों के सामने एक चीज को corroborate किए बगैर, चेक किए बगैर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया. This is how bad news is spread all over, and then people in North America call us कि पाकिस्तान में ये खराबी है. People from London call us and they say पाकिस्तान में ये खराबी है. So please corroborate and verify before you allude to anything. Thank you. जी. You mentioned कि against plastic bags आप लोगों ने legislation किया. Yes, you are absolutely right. A lot of legislation is done in the province of Sindh. लेकिन हम देखते हैं कि वो legislation फिर implement नहीं होता. आप personally involved थे in the Sindh Injured Persons Act की legislation में, जिसमें एक बच्ची because of a gunshot अमल उमर की death हो गई थी. और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिंध इंजर्ड पर्सन्स एक्ट, द अमल उमर एक्ट इनैक्ट तो कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम नहीं आए. तो प्लीज़ टेल अस कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती लेजिस्लेशन की. ये मेरा एक सवाल है. और दूसरा सवाल ये है दैट सिंध में हम बहुत सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देख रहे हैं इंडीड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द इंडस हॉस्पिटल, अ लॉट ऑफ NGOs like the Patient Aid Foundation, like also TCF, a lot of good work is being done indeed. लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि parallel structures, कि गवर्नमेंट स्कूल भी चल रहा है, गवर्नमेंट मुलाजमीन भी चल रहे हैं, वजारतें भी चल रही हैं. थोड़ा समराइज कीजिएगा प्लीज जल्दी, ताकि कमी नहीं आ रही. तो अगर हमने ये सब काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को देना है, और दे देना चाहिए बिकॉज दे सीम टू बी डूइंग बेटर वर्क, मेकिंग अ बिगर इम्पैक्ट, तो फिर where do we see the future of Karachi and the Sindh government and the role of the let him respond please. मैं पहला क्वेश्चन का बड़ा वन लाइनर जवाब है. If you want the government to be accountable for enforcing or not enforcing its decisions, you should allow the government to act. And unfortunately, our executive supremacy, which is provided for in the Constitution, that has been completely compromised because of constant interventions by various departments, including the courts of Pakistan. I am of the view, if the statute has provided a certain provision, let the government officer, whether it's the DC, the commissioner, the SP, DIG, IG, the secretary, to carry out that decision. And once they don't make the decision, the parliament is there to scrutinize them, the people are there to question them. Problem ये हो गया है, हम लॉ बनाते हैं, इन्फोर्स करने की कोशिश करती हैं, अदालतें बीच में आती हैं, स्टे ऑर्डर दे देती हैं. कैसे काम किया जाएगा? जब कोई अफसर काम करने की कोशिश करता है, उस अफसर को कोई बंदा केस फाइल करता है उसके खिलाफ, अदालत रोज बुला के पूछती है. मैं खुद अभी फ्राइडे को सुबह 8:30 बजे अदालत में पेशी भुगत के आया हूँ, और मुझे अदालत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने का मौका ही नहीं दिया. मेरी गलती सिर्फ ये थी, मैंने अदालत को ये कहा कि विद ग्रेट रिस्पेक्ट सर, I don't agree with your decision. Why? Because of these reasons. The moment I said, sir, I don't agree, उन्होंने कहा ठीक है, you submit your reply in writing, we are issuing you a show cause notice. So I'm of the view, I'm 40 years old, मैं समझता हूँ इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है ना, तो we need clarity of thought in decision making. Because of these constant interventions, the decision making process has become compromised and we are suffering as a result of omission. जो वेस्ट से पढ़ के आए हैं यहाँ पे, वो आपको बताएगा कमीशन इज अ क्राइम, ओमिशन इज अ क्राइम. हमारे मुल्क में कमीशन को हम क्राइम समझते हैं, ओमिशन को क्राइम नहीं समझते. आई फील फेलिंग टू एक्ट शुड बी अ क्राइम. जब फैसले नहीं किए जाते, दे शुड बी ऑल्सो डीम्ड एज क्राइम्स. और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा. आरिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? Picking up on what you have said, I have been the evaluator from the UN side of 2 Karachi master plans. I'll talk very briefly, 2 sentences about that. But before that, I would like to say that the development projects of various local governments in Karachi have rendered over 200,000 families homeless. I do not think there could have been a bigger crime
Not only that, of those 200,000 families, there were about 100,000 students who lost their schools, who lost their education. And I don't want to name the bureaucrat, although he is dead. But when I put this before him and I said 100,000 students have lost their education, and I said that there are so many students who could not take their metric and their inter-examinations, he said to me, in that case, we should have demolitions after the final examinations. I point this out because to show you that there is a very strong anti-poor bias in planning and in policy making. And we are all complicit with that because we are happy with it. It doesn't bother us. And unless you remove that, I'm afraid nothing is going to improve. You can have as many projects as you like. I worked on numerous ones. There are small islands that you create which cannot grow. That's number one. Number two, there are many cities which have multiple agencies. And in the Karachi Development Plan 2000, we had suggested the building of a Karachi division, urban planning, something or the other. And we had put all the various people together from the different plot. And आप भी देख लीजिएगा उसको कि क्या propose किया गया था. And you know, not one single one of those agencies objected that we will not be a part of this. Therefore, it is my firm belief, which I have suggested again and again, that what you really need for all of Pakistan, but especially for this city, is a reform process. And without that, you are not going to change very much, although with all your good intentions, because that's where it's going to be stuck. And a commission was formed to work on this, and it did submit a report, but that then became classified. You cannot get a single copy of that report today. We are already out of time, but we only take two. Sir, मेरा एक question Just 1 minute. Sir. Just 1 minute. Sir, Murtaza Wahab साहब, इंसान की मेरा basic सवाल है. इंसान की basic ज़रूरत पानी है. Let's work together to provide potable water to every citizen of Karachi. Let's make it a priority. Let's work together for the betterment. Let's prioritize. Yes, we should have mangroves, but water is the essential necessity of a human. What is your question, please? My question is, let's work together. Are you ready? Okay. That's it. पानी मुझे भी चाहिए. नहीं आपको तो मिला हुआ है ना, मुझे नहीं मिलता. और औरंगी वाले को नहीं मिलता. Sorry. Okay. औरंगी वाले को नहीं मिलता. जी तारिक साहब. I'd just like to say one little thing. There are times in our lives, where we need to draw the line. This is one of those times. It is possible right now because there are some people in place and there's a lot of passion and desire to get things done. However, unless all of you and all of us do not sit together and work with all of them, nothing will happen. If we are going to be antagonistic and prejudiced and have preconceived ideas and thoughts about people, and we do know that that happens and exists, nothing will happen. So for the young people who are nodding their heads, and thank you for nodding your head, it is very important that even you step up and you take up the offer and say, what can we do? This is what I'd like to do. Tariq Thank Sahab, you. Tariq Sahab, let's be fair with the ladies. That lady wants to ask a question. सर मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि डिफेंस क्लिफ्टन और वो जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे आपको काम करने के लिए बहुत से मुश्किलात का सामना है और वहाँ पे नहीं करते. लेकिन मेरा सवाल है कि आपको कोरंगी में, औरंगी में, शालतीस में, गुलशन अदीद में, मारूरा गोठ में, फ़कीर गोठ में, ये जो वहाँ पे बड़ी रिच आबादी है, वहाँ पे काम करने से आपको किसने रोका है? मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं अपने एरियाज़ आपको दिखाता हूँ. वहाँ पे म्यूनसिपल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आप देख लें और वहाँ पे भी आप करें. दूसरी मेरी गुजारिश है, आप बैरिस्टर हैं, मैं भी बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ. मेरी गुजारिश है, हम सब जो है ना बड़ी आसानी से पूरा मलबा जो हमें काम नहीं करना होता है वो अदालतों के ऊपर ठोक देते हैं. काइंडली विजिट दी
अपना आपका जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसको भी देखें। जैसे आपने बैग्स की बात की है, वहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट करती है। अगर वो सॉलिड बात नहीं करेगी तो यकीनन अदालतें स्टे देंगी। इसको भी आप You made your point, sir. You made your point, lady. That lady there, and then this gentleman. Hello. Thank you very much for being here. One question, one suggestion, very quickly. My question is that I read in the Dawn newspaper some couple of months back that there are friends of this river, this Neher that's going behind. They said we are ready to make it clean, but we are unable to because we cannot get the government to give us the requisite go ahead. I want to know why, if it's because this is such a vital thing going right through Karachi. Number two, I know that a lot of people of Karachi would want to work with you. Could you set up a cell where we can just come and say we want to do this? Because I know a lot of people do, and I'll be the first one to come. But we need a place that we can go to. I mean, I wouldn't know where to go, what to do, but I would love to work with the government. And I'm sure many would do. And if you could just set up a cell, it would be a great service to our city, I think. Let me respond to the first question first. आपने जो नहर की बात की वो ये नहर नहीं है, वो नहर ख़याम है. नहीं, that's नहर ख़याम जो कि बोर्ड बेसिन से होते हुए माई कुलाची की तरफ जाती है, बेनज़ीर भुट्टो पार्क के थ्रू it goes into, वो नहीं है, वो पीछे वाली है. उसका 2020 में मैंने गवर्नमेंट से अप्रूवल करा के NOC उनको दे दी थी, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी की थी उन लोगों ने, but then COVID happened and their donors sort of got skeptical because of the situation. I've again, after becoming the mayor, I've engaged with Shahid Abdullah Saab. जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है वो देर है, काम उसके ऊपर हो रहा है. He needs to now get his donors on board so that the work can happen. The NOC, the agreement has happened. आज मैं ऐसा करूँगा, बल्कि मंडे को agreement लेके मैं tweet कर दूँगा ताकि आपको भी पता चल जाए that's been done. दूसरा जो आपने बात की, that's a fair point. अब वैसे तो मेरा नंबर पब्लिक है और इतने फ़ोन आते हैं कि मैं मुझसे कांटेक्ट करने का एक आसान तरीका है, ट्विटर के ज़रिए मुझे मैसेज कर दें तो वो आसान रहता है. बट व्हाट आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग इज़, कराची का पहला कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम हम डेंसो हॉल में बना रहे हैं, जो कि 23 मार्च को इंशाल्लाह इट विल बी ओपनड अप फॉर पब्लिक. मैं उसमें ऐसा करूँगा कि वंस अ वीक आई विल सिट देयर and it will be an open house for the public to come for 2-3 hours, engage with the mayor, speak with the mayor, and offer their services for the city of Karachi. So 23rd March, inshallah. Excuse me. बाकी वो जो आपने बात की थी, इसका मैं बहुत लंबा जवाब दे सकता हूँ. मेरे दिल की बातें इतना खुद ना खुलवाएं कि कल को कुछ और हो जाए. बाकी सॉरी, एक आपकी पानी वाली बात सर. I would like to be remembered after 3.5 years as the man who solved the water problems of Karachi. ये मेरी commitment है, मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ. अस्सलाम वालेकुम. मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. आप you have always been very responsive whenever we have asked you for any problem. जब मैं जानना चाह रहा था कि ये जो क्लिफ्टन और डिफेंस के दरमियान ये जो सी व्यू है, ये जो बीच है, एक तो वैसे ही कराची के अंदर रिक्रिएशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है. ये जो 18-20 किलोमीटर की पट्टी है जिसको हम सी व्यू कहते हैं, यहाँ से क्लिफ्टन ब्लॉक 1 से फेज 8 तक जाती है, इसका मुस्तकबिल क्या है? इसलिए कि ये तो एनक्रोचमेंट इतनी शदीद हो गई है कि आइंदा वक्तों में मुझे लगता है कि बीच पे आने वालों को एक दरवाजे में से टिकट लेके जाना पड़ेगा कि अच्छा जी कराची में यहाँ पे एक समुंदर साहिल है, क्योंकि एक तरफ आपने पोर्ट बना दी 1.5 किलोमीटर की, आगे जाए तो वो डॉलमेन है, वो डॉलमेन एनक्रोच ना सिर्फ एनक्रोच है बल्कि शाम के वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है. आगे चले जाइए टुवर्ड द एंड ऑफ फेज 8, वहाँ पे इमार और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और दरमियान में जितनी भी आप लैंड रिक्लेम करते जा रहे हैं, कहीं जंगलात लगाकर, कहीं कुछ करके एक निशाने पाकिस्तान वालों को भी आपने लैंड दे दी है. एक तो पहले ये पता चलना चाहिए कि मास्टर प्लान के अंदर इस बीच की जगह क्या है, इस मास्टर प्लान के अंदर इसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, और ये तमाम मुस्तकबिल के जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है. You made your point, sir. You made your point. Let him respond. मुर्तज़ा साहब से इजाज़त ले लिया. इसका मुस्तकबिल बहुत क्लियर है. 2050 तक ये डूब जाएगा. नहीं, he is right. अगर मेरी जिंदगी, अगर मैं हया हूँगा तो ये डूबा हुआ होगा. मैं खुद ये टेक्निकली बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हो जाएगा. किसी को इस पर डिबेट करनी है तो कर ले, इसलिए अभी से वहां से पुल आउट कर ले तो बेहतर है. इसका असल जो वन लाइनर जवाब है वो ये है, none of the questions pertain to me. You see, this is the problem. This is the problem. वो जो आपका पोर्ट बनाया वो KPT ने बना दिया, हमसे थोड़ी पूछा उन्होंने.
जो बाकी जमीन है वो कैंटोनमेंट की आगे DHA की है. This is where the problem is, this is where the anomaly is. That anomaly needs to be addressed. ये लाश वो है जिसका थाना इनका नहीं लगता. अच्छा एक्चुअली चले हाँ एक लास्ट इनको दे दें भाई, मुझे ये ऑक्सफोर्ड वाले फिर निकाल देंगे यहाँ से. जो हमें ऑफर दिया है तो हमारा आपसे इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि आप अपने तौर पे चाहे कितना भी चाहें खुद नहीं कर सकते, और हमारा ताउन रहेगा. आप पे प्रेशर भी रहेगी, आप पे तनकीद भी रहेगी, आपको सॉल्यूशंस भी पेश करेंगे. ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो you made your point. Thank you very much. मुर्तज़ा साहब, अर्बन डायलॉग का आपने ऑफर कर दी है, तो इसी से अब शुरुआत कर लेते हैं. इस तरह के सेशन होते रहेंगे. और थैंक यू वेरी मच ऑल. थैंक यू. ये काम